Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I hope you are well. I'm showing you how to create this soft gold glitter eye, perfect for any bridal that you wanted to create. The tutorial will be in English and Urdu, so carry on watching to see how I created this. So I'm starting off with the eyebrows. I'm using an angled brush which is from Anastasia Beverly Hills, and I'm just using the Browzings powder just to fill in any gaps because I didn't really want a heavy brow and the eyebrows were quite full anyway, so I wanted to keep that quite simple. आईब्रोज के लिए मैं एंगल ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ, ये एनास्टेशिया बेवर्ली हिल्स का है और थोड़ा थोड़ा करके पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आईब्रोज काफ़ी फुल थे तो मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, तो आहिस्ता आहिस्ता बस थोड़ा सा फिलिंग कर रही हूँ एंड देन कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर जो लगा रही हूँ वो पी लुइस का है बेस जो इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आप कोई भी हैवी कंसीलर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैक का है 252। So I'm using the MAC 252 brush to apply this concealer. It's actually the base from P. Louise and it's in the colour Rumour. So I'm just patting this on and I'm using this at the top of the eyebrows as well just to create my shape, carving out the whole eyebrow, patting on the product and then taking away any extra product as well by patting away. Last time I showed you a quite heavy structured eye with the gold glitter, so I just wanted to show you the softer version, and this is really popular with brides. Using a clean fluffy brush just to clean up the edges and make sure everything is blended out. यहाँ पे clean fluffy brush से यहाँ पे blending कर रही हूँ कि सारी harsh edges जो हैं वो सारी blend हो जाएं। ऐसा ना हो कि जब फाउंडेशन आप लगाएं तो फिर वहाँ पे जैसे कई दफ़ा ना ड्राइड अप बेस नज़र आ रहा होता है, वो सही नहीं लगता। So I'm using the Huda Beauty Naughty palette and I'm using this brown with a medium sized fluffy brush, and that could be one of the ones that I use is the Morphe M456. So I'm just tapping this on and I'm just getting my colour in place. I'm not blending away or anything like that, I'm just getting my colour on at the moment. So Huda Beauty का पैलेट इस्तेमाल कर रही हूँ ये डार्क ब्राउन लेके, तो एक मीडियम साइज़ का फ्लफ़ी ब्रश है, इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। टैपिंग मोशन से इन कॉर्नर्स पे लगाई जा रही हूँ, लेकिन ब्लेंडिंग बिल्कुल नहीं करी। यहाँ पे सिर्फ मैं कलर अपना लगा रही हूँ। ब्लेंडिंग मैं एक लाइट कलर से करूँगी और एक छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश लेके तो इसकी ब्लेंडिंग बाद में करूँगी, आप 2 सेकंड में देखेंगे। So I'm going to blend this colour out with a small fluffy brush, and I'm just taking this slightly lighter brown colour and just over the edges I'm going to start blending. I'm actually using the same colours from the last look as well, just to show you that obviously I did exactly the same, I just haven't applied any glitter in this look, but just to show that how different things look, like the same product looks different on different people, and if it's applied differently the outcome is different as well. So इसकी हाश एजेस आपने थोड़ी थोड़ी करके ऐसे ब्लेंड कर लेनी है। अब जब इतनी ब्लेंडिंग कर चुके हो तो जो आपका पहला कलर होता है ना वो थोड़ा सा कम लगता है इस बार, तो आपको बैक एंड फोर्थ जाना होता है। तो ये जो पहला कलर था इसको मैं अभी एक क्लीन फ्लफी ब्रश से बस ब्लेंडिंग कर रही हूँ कि इसकी सही ब्लेंडिंग हो जाए यहाँ से। Just using a clean fluffy brush, I always go back to this and just clean up any harsh edges that I have.
So just going in with that brown again, because after that blending I've lost the depth of the colour, so I'm just tapping in a bit more colour, and then again I will go in with another blending brush and add the first colour I use and blend that out. So it's a lot of back and forth that you have to do. So ये वही मैं डार्क ब्राउन अभी इसको थोड़ा सा ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो ऑब्वियसली मुझे कम लग रहा था। फिर जो पहला शेड इस्तेमाल किया था वो वापस लेके एंड देन फिर वापस ब्लेंडिंग करूँगी। बहुत ज़्यादा ये होता है कि बैक एंड फोर्थ, मतलब बार बार आपको ना जो पहला कलर लगाया हुआ होता है उसको फिर दोबारा लगाना पड़ता है। ब्लेंडिंग ऐसे ही होती है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ता है बीच में। So I'm just taking this gold on my fingers from the same palette and I'm just going to apply this onto the eyelids. Now I tend to just press my finger on and sweep down, and then I'm going across to the inner corner and the outer corner of the eyes. So I'm taking it like pretty much halfway across the eye as well. So ये Huda ब्यूटी का ही गोल्ड है। आज मैंने ग्लिटर नहीं लगाया था, इसके ऊपर ग्लिटर भी लगा सकते हैं, लास्ट वीडियो में ग्लिटर भी लगाई थी, तो इसको थोड़ा सा मैंने सिंपल रखा हुआ है आईज को आज, तो ये अपनी फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ। अब आपने ये लगा लिया तो इसकी जो आउटर कॉर्नर्स है उसकी ब्लेंडिंग भी करनी है कि वो फिर अनफिनिश ना लगे। So just at this point then I've just taken a small amount of that brown colour again and just blending it out into the socket areas and making sure that it covers the gold a little bit, so it needs to overlap a little bit so that it doesn't look unfinished. And then I've gone in with my Maybelline Gel Liner and I'm just lining the inner eyes with a small eyeliner brush, and I'm not quite sure where this one is from actually, but I will have to check for you. And I'm just applying this right inside, and I didn't want it underneath or smoked out, anything like that, just a simple black eyeliner inside the eyes. So eyeliner मैंने अप्लाई किया है जेल आईलाइनर Maybelline का, एंड ये लगा के तो obviously अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मुझे सिंपल आईलाइनर चाहिए था आइज़ के अंदर, और कुछ नहीं चाहिए था कि स्मोकी हो या ऐसा कुछ भी. So I'm using the Charlotte Tilbury Magic Cream, and then I've let this absorb into the skin, and then I've gone on to add the Benefit Porefessional Primer. And the foundation I'm using today is from MAC, and this is a full coverage foundation, but it is only available to people who have the Pro card. So if you have the Pro card you can get this, and it was actually a really nice foundation as well, so you can have a look what it's like. And I haven't applied a lot today. I normally go in and sweep in lots of foundation, but I haven't done that today. I've applied it generously, but still not as much as I normally do. Now I've gone on with the Kryolan paint stick and to color correct. Now this is the dark shade obviously that I use on colors on people who actually have a slightly deeper tone, but you can see I get away with it with this skin tone as well, even though she was really fair. So I just wanted to show you that you don't have to keep chopping and changing. I know there's rules out there sometimes, but you can bend those rules and you can get away with it. It's not as though the eyes were looking dark or anything like that, even in reality or even in the pictures, and you'll see that. कलर करेक्टिंग मैंने की है क्रायोलॉन की ओरिएंटल शेड से. नाउ ये शेड थोड़ा सा डार्क था ऑब्वियसली, लेकिन मेरी किट में ये था. लाइटर कलर्स भी हैं, लेकिन बस मैं हमेशा यही लगा देती हूँ, और आप देख सकते हैं बाद में कि रियलिटी में भी एंड पिक्चर्स में भी कोई पता नहीं चल रहा कि थोड़ा सा डार्क कलर था. सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं यही दिखाना चाह रही थी कि इट डजंट मैटर कि यू नो हर किसी के लिए आप वो हर कलर तो नहीं ना हो सकता. तो ये हालांकि मैं थोड़े से डार्कर टोन्स पे ये इस्तेमाल करती, लेकिन इधर भी इस्तेमाल किया एंड वाज एब्सोल्युटली फाइन एंड बिल्कुल ठीक था एंड कवरेज हो गई थी. तो फाउंडेशन जो है वो प्रो की मैंने यूज़ किया, मैक प्रो की. सो ये आपको अकाउंट होना चाहिए, जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है उनके पास नॉर्मली होता है, तो वो ये ले सकती है. और ये वाज अ वेरी नाइस फाउंडेशन, और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाई मैंने. आप देख सकते हैं कि ब्रश के साथ मैं लगा रही हूँ. नॉर्मली मैं आपने देखा है कि कई दफ़ा पेंट स्टिक लगाती हूँ, फिर उसके ऊपर एक और लिक्विड लगाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाती हूँ. ये सिर्फ एक प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि आज मैं थोड़ा सा सिंपल लुक चाह रही थी, और फिर भी फुल ऑन था, ये फुल ब्राइडल लग रहा था. So under the eyes, as usual, I'm using the Kevin Aquan Sensual Enhancer. This is in the colour SX03. I'm just using a brush just to apply that. I'll have to put in description what the brush is actually. I'm sure it's from Morphe, but I can't remember, I'm afraid.
But yeah, so I've applied that underneath the eyes and down the bridge of the nose, the forehead and the chin, and then I'm going in with a Too Faced concealer, which I'm absolutely loving at the moment, and that's in Mahogany. This is a liquid, so you do need to be a bit careful with this. So केविन कौन का कंसीलर लिया है आइज़ के नीचे, उसको लगाया है जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ मेरी हर वीडियोस में। अभी तक मैंने यही कंसीलर इस्तेमाल किया है। एंड देन टू फेस का कॉन्टोर ये कंसीलर लिया है जिससे मैं कॉन्टोर करूँगी ना। कॉन्टोरिंग आपने देखना है ये लिक्विड का है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसमें थोड़े से और अभी मुझे कलर्स चाहिए। अभी ये इस वीडियो में ये पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रही थी और थोड़ा सा डार्क था ओबियसली, लेकिन बिल्कुल इसकी कॉन्टोरिंग सही हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है, बहुत लाइट है। बस इसका ये ध्यान रखना कि जब आप ब्लेंड कर रहे हो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अपने हाथ पे या टिश्यू पे उतार लें। ब्रश से मैं बार बार, आपको शायद नज़र नहीं आए, लेकिन बार बार ना मैं ब्रश को साफ़ किए जा रही हूँ कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट फैले नहीं, और इतना ब्लेंडिंग करके फिर मैं कंसीलर के साथ बाकी की ब्लेंडिंग कर लेती हूँ। Now the Too Faced concealer is absolutely gorgeous. I am in love with it at the moment. This colour is slightly dark, but I had to actually just purchase this, and it's the first time I used it on my model here. But I love the consistency and the way it blended out. Now you just need to be careful, it is a liquid, so just be careful when you're blending away. You couldn't really see it on camera, but every time I was blending, the majority of the product that was on the brush, I was wiping it away on a tissue on the back of my hand and then going back in, because otherwise that product will actually end up being spread out across over the whole face, and you don't want that. And then obviously I kind of like just set it where I need to, and then I'm using the concealer later on to make sure that I can, you know, blend everything out. So here now when I'm using the tapping motions with my beauty blender, I kind of like go into the contour that I've already done now. So some people do it the other way around. Some people do the concealer first, the highlight, and then they blend the contour way. So I struggle with that because I always think I'm quite heavy-handed with the contour, so I like blending out this way. So एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने यहाँ पे अभी जो भी हाईलाइट एरिया किया था तो उसको टैपिंग मोशन से आपने उसको हाईलाइट कर देना है, और टैपिंग मोशन से ही इसको अभी ब्लेंड कर देना है। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपका ये जो लाइट कलर है ना, ये इसको मैं थोड़ा सा रोल करके ना तो डार्क कलर में चली जाती हूँ, तो उसकी ब्लेंडिंग अच्छी हो जाती है। So you can just see I'm trying to just blend everything out now and make sure there's no harsh lines. So underneath the eyes, I'm setting the eyes with the Laura Mercier loose powder now. So I've just used my damp beauty blender, and I'm just using this just to work in the product, and I'm not actually baking at the moment, I'm just letting everything absorb in. So I'm doing this mainly where all my highlight was, and then where the contour is I'm actually going to use a deeper powder. So I'll show you that in a second as well. So लूज़ पाउडर से जिधर जिधर मैंने हाईलाइट किया हुआ था वहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैंने ब्लेंडिंग की है पाउडर की, तो काफ़ी ज़्यादा जैसे उन एरियाज़ में ज़्यादा लगा है, फिर दूसरे एरिया में थोड़ा सा कम कम लगा रही हूँ। और जिधर कॉन्टोर का कलर है वहाँ पे एक्चुअली मैंने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे मैं दूसरे कलर से पाउडर का जो है उससे मैं ब्लेंडिंग करूँगी और सेट करूँगी। सो यहाँ पे मैं मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर ले रही हूँ NC40 में, तो यहाँ पे मैं उसको सेट कर रही हूँ, और यही मेरा कॉन्टोर पाउडर भी हो गया है, क्योंकि काफ़ी डीप शेड है, तो इससे एक तो कवरेज आती है, तो एक इसकी ब्लेंडिंग भी अच्छी होती है। So I've used the MAC Studio Fix in NC40 now, so this is actually setting my contour and it's also blending it out for me, so I don't need a separate contour powder here or a bronzer or anything like that. I like using this because it's got an extra, the colour's beautiful and it blends away really nicely as well, and it gives you that slightly more coverage as well. Down the sides of the nose as well I'm using it, and my model liked quite a sharp contour, so I went a bit heavier than what I would normally, and then I blend it out with a little bit of the light powder, the NC20 I think I use. Later on you'll see me do that as well, so at the moment I've left it a bit unblended.
center of the nose, I've just used the there's a little bit of concealer on that brush, so I just use that just to define the center of the nose again. So the underneath the eyes, I'm just using a fluffy brush, and I'm using that orangey brown just to smoke out the eyes underneath a little bit. So आइज़ के नीचे ये एक छोटा सा फ्लफी ब्रश लिया है, एंड यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा वो जो पहला जो शेड था उससे मैं आइज़ के नीचे भी लगा रही हूँ, थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए, क्योंकि बहुत प्यारा लगता है जब ऐसे करें तो। और ये जो हार्श एजेस हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी, इनको मैं बाद में अभी पाउडर से ब्लेंड करूँगी। So you can see the harsh edges at the bottom and the sides of the eye. So I blend those out with basically some powder. So I've got my big clean fluffy brush, and I've dipped that into my Studio Fix powder NC20. And so I take this right underneath the eye and around the eyes, and you can see I'm just doing circular motions, sweeping motions, and really clean up the eye. And this is where I actually blend out and let my eyeshadow go out as much as it needs to, but I'll blend the edges out. And I'm doing the same with the nose as well. So ये जो फ्लफ़ी ब्रश है इस्तेमाल कर रही हूँ एंड पाउडर में लगा के, एंड नोज़ की भी कॉन्टूरिंग थोड़ी सी सही कर रही हूँ, उसको सॉफ्टन कर रही हूँ। एंड आपने देखा था कि आइज़ के नीचे भी मैंने इसको इस्तेमाल किया और उसकी सारी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अभी सारे पाउडर्स लगा दिए। अभी मैक फिक्स प्लस का स्प्रे इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड देन अपना हाइलाइटर लगाऊंगी जो बेका का है, बट ये कंपनी अभी मेरे ख्याल बंद हो गया, तो ये शायद प्रोडक्ट आपको अभी मिले नहीं। मेरा भी ख़त्म हो रहा है, आई थिंक एक दो दफ़ा और ये इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो बाद में कोई और इस्तेमाल करना पड़ेगा। So I use my MAC Fix Plus. It is important that you hydrate the skin afterwards, because we've obviously put so much powder and product on it. So this just helps bring back the skin to life. And I've gone in with my Becca highlighter. This is actually, I think they've discontinued, or the company's closed, shut down now. So I don't think you'll be able to get it now. So I will be changing my highlighter soon. So I'm using the lip liner from Decay, and I use the MAC liquid lipstick. Now my model already had lined her lips for me, and then I filled in the lips as well. So यहाँ पे लिप लाइनर लगाया था, मेरी मॉडल ने खुद ही अपना लिप लाइनर लगाया था, इसलिए वो उसको ऐड नहीं किया। एंड ये मैक की लिपस्टिक है, तो यही आपका कंप्लीट लुक हो गया। सो आई होप आपको ये लुक पसंद आया। एंड तक देखिए, आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। बाल काफ़ी सिंपल थे, इसलिए उसका ट्यूटोरियल नहीं किया। ओ यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिटर आइज़ के नीचे मैं लगा रही हूँ, तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। I hope you guys have enjoyed this tutorial. I'm just adding some of that glitter from Urban Decay underneath the eyes, and then basically this was the final look. So I haven't done a hair tutorial today because it was quite simple, but I'm going to leave you to watch the final pictures, and if you did like, please do subscribe and like and comment. Inshallah, I'll see you next time. Take care. Bye bye.